Good morning, dear children. As you know that we have been studying chapter 4 plants around us. And now in previous class we had completed terrestrial plants. The plant which grow on land are called terrestrial plants. Now today we will study about aquatic plants. What are aquatic plants? Those plants which grow in water, that is called aquatic plants. So this is your aquatic plants, plants growing in water. There are two types, floating aquatic plants and underwater plants. In floating aquatic plant, again there are two types, free floating plant and fixed aquatic plants. So we will discuss one by one all the types of aquatic plants. First we have to know that what is the meaning of aqua. It is given in do you know. Aqua means water and aquatic means existing or happening in water. Now, first, floating aquatic plants. Here it's two types, free floating plant and fixed aquatic plants. So first I will discuss about free floating plants. Water lettuce and water hyacinth and duckweed are found floating freely on water. They are not attached to any surface. They have air-filled cavities in their leaves and stems. These cavities make them light and help them to easily float on water. So what is the meaning of this free floating plants? I will explain in Hindi. Water lettuce, water hyacinth and duckweed are found floating freely on water. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं. दे आर नॉट अटैच टू एनी सरफेस. ये सरफेस से अटैच नहीं होते हैं. दे हैव एयर फिल्ड कैविटीज इन देयर लीव्स एंड स्टेम्स. इनके जो स्टेम्स और जो लीव्स होते हैं उसमें एयर फिल्ड कैविटीज होती है. आई नो योर क्वेश्चन इज मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर फिल्ड कैविटीज. हैव यू सीन अ बलून? अगर हम एक बलून को ऐसे ही पानी में अगर रख देते हैं तो क्या होगा? दैट इज़ सिंक इन वाटर. बट अगर हम उसे उसमें एयर भर देते हैं तब क्या होगा? आफ्टर फिलिंग एयर इट इज़ नॉट सिंक, इट इज़ फ्लोट ऑन वाटर. वो पानी में डूबेगा नहीं, वो तैरेगा. दैट इज़ बिल्कुल उसी तरह वाटर लेटस, वाटर हाइसिन एंड डॉकवीट के जो लीव्स और स्टेम होते हैं बिल्कुल इसी तरह होते हैं. उसमें एयर फिल्ड कैविटीज़ होती है जो कि उन्हें दे मेक देम, दिस कैविटीज़ मेक देम लाइट एंड हेल्प देम टू इजीली फ्लोट ऑन वाटर. और वो बिल्कुल लाइट बनाता है और बिल्कुल पानी में आसानी से तैर सकते हैं. नाउ लुक एट हियर वाटर लेटस. इसके जो लीव्स हैं, वाटर हाइसिंथ, duckweed, and just look at the stems of water lettuce. बिल्कुल लाइट हैं, ये आराम से पानी में तैर जाते हैं, ये किसी सरफेस से अटैच नहीं होते हैं. सो दिस थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट. वॉट इज द स्पेशल इन इट? दे हैव एयर फिल्ड कैविटीज इन देयर लीव्स एंड देयर स्टेम्स. दिस कैविटीज make them light and help them to easily float on water. Now next one, fixed aquatic plants. What are the fixed aquatic plants? Lotus and water lily are examples of fixed aquatic plants. Such plants are attached to the pond bed. They have stems with holes and their leaves are broad. The stem of lotus, commonly known as kamal kakri, is eaten as a vegetable. Lotus and water lily. You have seen lotus and water lily. They are the example of fixed aquatic plants. Such plants are attached to the pond bed. ये बिल्कुल पॉन्ड में अटैच होते हैं. ये इनके रूट्स जो होते हैं बिल्कुल आपके जो अंडरग्राउंड वाटर में जो मिट्टी होती है उससे अटैच होते हैं. They have stem. Look at here. They have stems with holes and their leaves are broad. And the stem of lotus are known as kamal kakri.
is eaten as a vegetable. लोटस और वाटर लिली जो प्लांट्स हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं उसमें होल्स होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, और इसे वेजिटेबल की तरह खाया जाता है जिसे कमल ककड़ी कहा जाता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं जो आपने देखा होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज अंडर वाटर प्लांट्स। Hydrilla is an example of a plant that grows underwater. It has pointed and strap-like leaves. Here it is example of underwater plants Hydrilla. You can see in picture what type of plant it is. It has pointed, बिल्कुल पतले पतले और बिल्कुल जाल जैसा, बिल्कुल ही जाल जैसा बना हुआ होता है। ये है टैप ग्रास। टैप ग्रास is also example of underwater plants. So now, what have you studied now? We will revise first. Aquatic plants. The plants which grow in water are called aquatic plants. There are three kinds of aquatic plants: floating plants, fixed plants and underwater plants. So here these are the floating plants, fixed plant and underwater plants. Floating and fixed are both are the example of floating aquatic plants, are the types of floating aquatic plants. Floating plants. The plants which float on the surface of water are called floating aquatic plants. वैसे प्लांट जो पानी में तैरते हुए दिखते हैं वो होते हैं फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। आपने देखा होगा तालाब वगैरह में जब काफ़ी बारिश हो जाती है तो पूरे पत्तों से वो ढक जाता है, वो जो आपको जो दिखता है वो लीव्स से जो ऊपर ढका हुआ वो जो तालाब है वही उसमें होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, जैसे वाटर हाइसिंथ, डकवीड एंड वाटर लेटस. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. सच प्लांट्स हैव लाइट एंड स्पंजी स्टेम्स विच हेल्प देम टू फ्लोट इन वाटर. और इसके जो स्टेम होते हैं बिल्कुल लाइट होते हैं और स्पंजी होते हैं जो आराम से पानी में फ्लोट कर सकते हैं. Water hyacinth, duckweed, water lettuce is the example of free floating plants. Come to the fixed plants. Water lily and lotus. The plants that have root fixed to the soil under water are known as fixed aquatic plants. वैसे प्लांट जो पानी के अंदर मिट्टी से अटैच रहते हैं वो होते हैं फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स. वो बिल्कुल पतले होते हैं, उनके स्टिम्स बिल्कुल होल वाले होते हैं जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, वो आराम से पानी के सरफेस से पहुंच जाते हैं. द लीव्स ऑफ सच प्लांट आर ब्रॉड एंड फ्लैट. और ऐसे जो प्लांट के जो लीव्स है काफ़ी बड़े और चौड़े होते हैं. दे आल्सो हैव वैक्सी कोटिंग दैट प्रिवेंट्स द लीफ फ्रॉम रूटिंग. और ये इसे बचाते हैं एक जगह जमा होने से. सो दिस इज द लोटस and water lily. These are the example of fixed aquatic plants. Now come to the underwater plants. Tap grass, pondweed is also the example of underwater plants. In your book, hydrilla is only given, but you have to know some another underwater plant, that is tap grass and pondweed. Some plants grow underwater. Such plants are called underwater aquatic plants. Tap grass, pondweed and hydrilla are such plants. Their leaves have no pores and they breathe there through their surface. इसमें इनके जो लीव्स होते हैं उसमें बिल्कुल पोर्स नहीं होते हैं, कोई स्टोमेटा नहीं होता है, और ये जो अपने सरफेस से ही इसमें क्या होते हैं सांस लेते हैं. सो दिस इज द हाइड्रीला, pondweed. These are the and tapeworm. These are the examples of underwater plants. Now, in last page, a do you know is given. What is it? Let me explain it. Aquatic plants. Here the example, do you know aquatic plant like hydrilla increase the oxygen content of water and remove carbon dioxide from it. एक्वेटिक प्लांट जो हाइड्रिला है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को बढ़ाता है पानी के अंदर और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इससे दूर करता है पानी से. दिस हेल्प इन मेकिंग वाटर सुटेबल फॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड हेल्प देम टू गेट इनफ ऑक्सीजन. और ये जो प्लांट हाइड्रिला है
ये फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को हेल्प करता है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने में। तो हाइड्रीला जो है वो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स जो है उसमें अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द revision of aquatic plants, that what have you studied today. Okay, I hope you understood it, and those who have confusion, first read the book. Thank you.